Hello viewers, the question is a bar magnet of magnetic moment 1.5 Joule per Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla. Part A. What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? Part 1. Normal to field direction. Part 2. Opposite to the field direction. And in part B, we have to find out what is the torque on the magnet in case 1 and case 2. So the problem is based on the magnet placed in the magnetic field, bar magnet placed in the magnetic field, the work done to rotate it, and the torque acting in different cases. So the first situation in part A, first situation is initially the bar magnet is placed along the direction of magnetic field. It means that this is north pole, this is south pole, this is the magnetic field direction, and we have to make its magnetic moment at 90 degree. So first of all, the magnetic moment is from south to north direction. So initially the magnetic moment is in the direction of B. So we can say that the angle between B and M is 0 degree in this case. Now we have to make the angle normal to the direction of the field, angle of the magnetic moment direction of the field. For example, this is north side, this is south side now in the final case. So this is the direction of magnetic moment, it is from south to north, and this is the direction of B. So it means that there is an angle of 90 degree in this case. So first of all, we have to calculate the work done to move this particular bar magnet from this position to this position. Now the work done is given by this formula. W is equal to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1, where theta 2 is the final position, this is the theta 2, and theta 1 is the initial position. Now putting the respective values, b m is 1.5, b is given as 0.22 Tesla, and cos of 90 degree minus cos of 0 degrees. Now cos 90 is 0, so this term becomes 0, and cos 0 is 1, so minus 1 multiplied by minus 1 is plus 1, so this value comes out to be plus 1.5 into 0.22. After calculating it, this value comes out to be 0.33 joules. So this is the work done in the first case. Now to calculate the work done in second case, we use the same formula, and the angles are different because in this case, in the second case, we have to move or rotate the magnet in such a way that its magnetic moment is opposite to the direction of the field. It means that this new orientation of magnet is like this. So this is here north pole and this is south pole. So the magnetic moment direction is opposite to the direction of the magnetic field in this case. Or we can say that the value of theta, now in this case theta 2, this is equal to 180 degrees. So applying this formula, same formula here, minus mb cos of theta 2 minus cos of theta 1. So minus 1.5 into 0.22. Now in this case theta 2 is 180. So this is cos 180 minus cos of 0 degrees. Now putting the respective values, cos 180 we know that this is minus 1, and minus 1 and minus 1 is minus 2. So this is 1.5 into 0.22 into minus 2. So this value comes out to be plus 0.66 joules. So this is the work done in the second case when the orientation of the magnetic moment is opposite to the direction of field. Now we have to calculate the value of torque of the magnet in case 1 and case 2. So to calculate the torque, we can see that the final direction of the magnet is 90 degree in the first case, and the final direction of the magnet is 180 degree with respect to the magnetic field. So we have to calculate the torque in part B. Now the torque is given by tau equals to m cross b, which is equal to mb sine theta.
So in first case, torque is equal to 1.5 multiplied by 0.22 into sine of 90 degree, because theta 2 is 90 degree. Final question is 90 degree. So this comes out to be 0.33 joules. So this is the value of torque. Now in the second part, the torque is 1.5 into 0.22 into sine of 180 degrees, because the angle in this case is 180 degrees. So this value comes out to be 0. So 0 joule is the answer of the torque in the case second. So this is the whole solution. एक बार इसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के बाद हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ मैं. इसमें पार्ट ए में हमसे पूछा गया है, वर्क डन. वर्क डन पहले केस में पूछा गया है जब इस मैग्नेट को फील्ड की डायरेक्शन से मूव करा के 90 डिग्री पे लाया जाए. यानी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो अगर अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड है इनिशियली और उससे रोटेट इस तरह से किया गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में वर्क डन पूछा गया है. तो वर्क डन के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया है W इक्वल्स टू माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1. यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू हम रख देंगे 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री. तो ये टर्म हो जाएगा हमारा 0, और इसको सॉल्व करने के बाद सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये रिजल्ट हमारा आया था 0.33 जूल्स फर्स्ट केस में. सेकंड केस में कहा गया है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन जो है अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड है. इसका मतलब मैग्नेट इस तरह से कि नॉर्थ यहाँ पे, साउथ यहाँ पे. नॉर्थ जो है लेफ्ट हैंड साइड में है, साउथ राइट हैंड साइड में है. मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तो इसलिए थीटा 2 की वैल्यू 180 है. इसी फॉर्मूले में जब हम थीटा 2 को 180 पुट करेंगे, cos 180 का -1 माइनस वन इज -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, दिस माइनस साइन तो प्लस का हो जाएगा. और इस केस में वर्क डन फिर हमारा आता है सेकंड केस में 0.66 जूल्स. इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया था. सेकंड पार्ट में टॉर्क पूछा जा रहा है, तो टॉर्क होता है m क्रॉस p यानी m साइन थीटा. पहले केस में थीटा हम पुट करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री ओरिएंटेशन दिया जा रहा है. तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद टॉर्क आता है 0.33 जूल्स. दूसरे केस में टॉर्क निकालने के लिए हमने देखा है कि एंगल हो गया 180 डिग्री, तो थीटा की जगह हम 180 डिग्री पुट करेंगे, तो यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आती है 0 जूल्स. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.